Now students, let us solve these two important questions for your board exam. कौन question देछि ना question number 1 मो पाखरे गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि मन रखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा कि ए पैरेलल आरो डिनोट करछि से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे मो गोटे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट गोटे रखि देछि से पचारिछि व्हाट इज द नेट फ्लक्स linked with this cylinder एटा ला क्वेश्चन तला हम एटी बाहर करबा केमति देखो ना फ्लक्स रो डेफिनेशन तो मको कहली फ्लक्स रो फार्मूला हला E डॉट A E वेक्टर डॉट A वेक्टर और S वेक्टर एटी देखो जेतु गोटे सिलिंडर टे दिया जायछि जस्ट एग्जांपल लेट्स से दिस मार्कर टा गोटे सिलिंडर टाइप रो शेप अप्रोक्सीमेट सिलिंड्रिकल शेप a cylinder देखो we have three different surfaces दुईटा base surface और गोटे curved surface बुझियला गोटे हला curved surface और दुईटा base surface तले आमे जेतोले फ्लक्स बाहर करबा सो देयर आमे तीनटा surface रो total flux contribution आमे बाहर करबा सेति पे मु कोन करली ना सिलिंडर surface को मु तीनटा ओरिएंटेशन रे डिवाइड कर देछि तीनटा डिफरेंट सरफेस रे डिवाइड कर देछि 1 2 3 1 और 2 योर प्लानर सरफेसेस 2 प्लानर सरफेस 3 टा हला कर्व्ड सरफेस अच्छा कर्व्ड सरफेस रो ओरिएंटेशन केमति जानिबा मु कहितली गोटे छोटो बा स्मॉल एरिया नबा सही एरिया रे हमें आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करबा देखो एटा आउटवर्ड नॉर्मल एटा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आउ आउटवर्ड नॉर्मल भितरे एंगल देखो केते 90 डिग्री काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ला यूनिफॉर्म माने डायरेक्शन ता सब गोले फिक्स अछि ता माने मु एक कर्व सरफेस ऊपर जोठी भी गोटे स्मॉल पोर्शन नेले भी धर मु ए फ्रंट साइड नेली तला आर ओरिएंटेशन रहिबो ए पटे इलेक्ट्रिक फील्ड रहला राइट साइड को समस्त मार्क करो यार ओरिएंटेशन रहला ए पटे इलेक्ट्रिक फील्ड रहला राइट साइड को सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री बुझियला ता माने curved surface the area vector of curved surface is making an angle 90 degree with the electric field ताला हम कहूचे यदि 90 डिग्री रहिला ताला हम फार्मूला अनुसार फ्लक्स रो फार्मूला हला E into S into cos theta so means E into S into cos 90 हला 0 तमाने जोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आ एरिया वेक्टर भितरे एंगल हे जिवो 90 डिग्री से जगह फ्लक्स हे जिवो 0 तले इटु जणा पडिला से कर्व सरफेस रो फ्लक्स रे कोनोसी कंट्रीब्यूशन रहिबो नाही तले हम वर्तमान जे टोटल फ्लक्स बाहरी करिवा लाइक phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 phi3 will be 0 जीरो कहीं की सेटा को तुम्हें मेंशन कर दबो मु जहाटा कहली सेटा को तुम्हें लिखि दबो देन वी विल गो फॉर phi1 एंड phi2 देखिबा phi1 रो ओरिएंटेशन कोआडे phi2 रो ओरिएंटेशन कोआडे देखो एटी वर्तमान ए मार्कर को ऑब्जर्व करो दिस सरफेस इज 1 ए सरफेस टा हला 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ए डायरेक्शन रे त माने एपटे यदि मु गोटे ए प्लेन सरफेस रे यदि मु गोटे नॉर्मल ड्रा करबी द नॉर्मल विल बी टुवर्ड्स योर what towards my right ए साइड को हो एपट साइड जे नॉर्मल ड्रा करिबे एटा एपट साइड को हो तले एटी ड्रा कर दवा ए प्लेन सरफेस रो ओरिएंटेशन हला राइट साइड को ए सरफेस रो ओरिएंटेशन हला लेफ्ट साइड को तो वर्तमान देखो फॉर सरफेस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वेक्टर n cap are in the same direction but for surface 1 electric field रहलानी राइट साइड को और n cap रहलानी लेफ्ट साइड को सो इन दैट केस ए केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड और n cap सेम डायरेक्शन रे थिबारु तांका भीतर एंगल हला थीटा बा दैट इज 0 डिग्री इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री सो phi1 कैन आई राइट E dot S phi1 that is cos 180 degree so which is equal to minus ES and phi2 is equal to E into S into cos 0 degree which is equal to E into S. Now and we know phi3 is 0 so which implies
phi is equal to net phi 1 plus phi 2, so minus Es plus E into S. So total flux contribution is 0. So remember, it would mane rakhi जेकोसी शेप रो ऑब्जेक्ट मु जदी गोटे यूनिफॉर्म फील्ड रे रखिबी ता सहित टोटल फ्लक्स लिंक विथ दैट सरफेस विल बी 0. So this is most important. So let us come to the second question. It is a most important question here. देखो ए केस रे फील्ड यूनिफॉर्म थिला बट ए क्वेश्चन टा आगे बुझी दियो मो पाखे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि गिवन बाय दिस फार्मूला Ex is equal to alpha x to the power minus half I cap. तमाने इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन रे अछि and Ey and Ez are 0. Y axis और Z axis रे फील्ड नाही. But the thing is इलेक्ट्रिक फील्ड इट कांस्टेंट नो इट इज अ फंक्शन ऑफ x. x माने x कोऑर्डिनेट. तमाने x रो वैल्यू जदी चेंज हे जीवो त इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू चेंज हे जाउची. तमाने एंड पॉजिटिव x ए डायरेक्शन रे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अछि पॉजिटिव x डायरेक्शन रे y और z रे इलेक्ट्रिक फील्ड नाही. पचारछि कोन ना इट गोटे क्यूब अछि ए क्यूब सहित केते फ्लक्स लिंक अछि बट व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस क्यूब. अच्छा ए केस रे देखो सेम फॉर्म प्रोसेस एटी हमें कोन करथले केतेटा सरफेस अछि देखुथले. ए केस रे देखो आज दिस आर द रेगुलर ज्योमेट्रिकल सेट देखो क्यूब रो 6 टा डिफरेंट फेसेस अछि. ताले हमें जतो बडे फ्लक्स बाहरी करबा टोटल फ्लक्स बाहरी करबा एटी 6 टा डिफरेंट फेसेस रो फ्लक्स रो कंट्रीब्यूशन हमको नबा को पड़ियो. त तुमे देखि दियो देखो y और z रे फील्ड हला 0 बुझियला. ओनली फील्ड दैट एग्जिस्ट इज अलोंग x एक्सिस बुझियला. ताले देखो एटी प्रथम देखो गोटे क्यूब रो केतेटा फेसेस अछि केतेटा फेस क्यूब रो 6 टा फेसेस. ताले हमको 6 टा फेस रो कंट्रीब्यूशन बाहर करिया को पड़ियो. ताले 6 टा डिफरेंट फेसेस रो ओरिएंटेशन देखिया पड़ियो. देखो सपोज गोटे एग्जांपल में लेट्स से दिस इज द अप्रोक्सीमेट क्यूब. क्यूब रो केतेटा फेसेस 1 2 3 4 5 6 6 टा फेसेस. 6 टा फेस रो ओरिएंटेशंस देखो अपर फेस ओरिएंटेशन रहला ऊपर बुझियला. एपट साइड ओरिएंटेशन एपटे ऑल आर प्लानर सरफेसेस. सेति पे देखो आर ओरिएंटेशन रहला ऊपर को यार सेपटे यार डाउनवर्ड एटा हला टुवर्ड्स मी एंड एटा हला टुवर्ड्स दिस साइड एपट फेस रहला टुवर्ड्स दिस साइड बुझियला. इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन होची केवल x एक्सिस रे माने i कैप केवल ए डायरेक्शन रे. माने इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली बुझियला. ताले हमें जतो बले फ्लक्स बाहरी करबा हमर फ्लक्स रो फार्मूला हला phi is equal to E into A into cos theta. मन रखो और E into S into cos theta जो जगह रे थीटा टा 90 हे जीवो सेठी फ्लक्स रो कंट्रीब्यूशन 0. ताले एठी देखो जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x एक्सिस रे अछि एंड एटा ए सरफेस रो ओरिएंटेशन होछि z एक्सिस रे यार हला y एक्सिस रे इस तोड़ा हला माइनस z डायरेक्शन रे एपटा हला माइनस y एक्सिस रे. ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड रहलानी x एक्सिस रे जदि सरफेस रो डायरेक्शन y बा z रे रहइबो ताले टैंकर फ्लक्स रो कंट्रीब्यूशन हे जीवो 0 बिकॉज़ थीटा टा सेठी 90 डिग्री हे जीवो. काहे कि गोटे सिंपल मु दोछ देखो ए सरफेस सरफेस रो ओरिएंटेशन रहला ऊपर को ए डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ए डायरेक्शन रे. इलेक्ट्रिक फील्ड एमती रहउची ए सरफेस रो ओरिएंटेशन रहला ऊपर को त तांका भीतर एंगल केते 90 बुझिया. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड रहउची गोटे पटे सब बडे ए सरफेस ओरिएंटेशन केते कोडे सेपटे त माने आंका भीतर एंगल 90 फ्लक्स 0. सिमिलरली फॉर दिस सरफेस एंड दिस सरफेस त माने ए क्यूब रो चारिटा सरफेस पई फ्लक्स कोन हे गेला ना कैंसिल 0 हे गेला 1 2 3 4. बाकी रहला ए सरफेस आमे ये दुईटा सरफेस पई यदि फ्लक्स बाहरी कर दवा आ टोटल फ्लक्स ऐड कर दवा आमे आंसर पाइ जिबो. त वर्तमान मो ओनली दिस टू सरफेस आई एम टेकिंग सो जेति तुमको लिखिया पड़िबो बाकी सरफेस रो फ्लक्स इज 0. सो लेट अस फाइंड आउट phi 1 माने केवल ए सरफेस पई फ्लक्स. अच्छा आउ गोटे इंटरेस्टिंग थिंग हला ए पॉइंट रो देखो at this point the value of x is equal to a and at this point here the value of x is equal to this is a and the length of the cube is what side length is a. So a point ro x ayala 2
मु काहे की x कोऑर्डिनेट यूज कली बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बिकॉज़ द मैग्नीट्यूड चेंजेस इट डिपेंड्स ऑन x जेहेतु एटी x रो वैल्यू a सो आई कैन टेक a x जगह a नै जीवी ए केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड जेतो बाहर करबी से x जगह 2a नै सो फॉर phi 1 I can simply write E1 into S1 which is E1 S1 cos देखो ए एरिया रो ओरिएंटेशन कहली लेफ्ट साइड को काहे धरो एटा एपट एरिया ओरिएंटेशन एपट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड अछि लेफ्ट साइड को सो ए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को एरिया रो ओरिएंटेशन लेफ्ट साइड को सो E1 S1 cos 180 अच्छा E1 टा बाहर करबा ए फार्मूला रे E1 इज इक्वल टू देखो अल्फा x रो वैल्यू होला a पावर हाफ तले एटी पकेबी अल्फा a पावर हाफ S1 टा कोन ना ए सरफेस रो एरिया टा ए सरफेस रो एरिया अच्छा यार जे तू साइड ले थला a एरिया रो मैग्नीट्यूड केते हबो a स्क्वायर cos 180 माने -1 so phi 1 is equal to minus alpha it is a to the power 3 by 2 plus 1 by 2 that is 3 by 2 that is phi 1 similarly I can go for phi 2 is equal to similarly E2 into S2 E2 is a point electric field so let us calculate E2 is what acha out jinsa एटी एरिया वेक्टर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम तले मोटे आगे लिखि दिए दैट इज E2 into S2 cos 0 and the value of E2 is that is ए फार्मूला देखो अल्फा x जगह केते पड़ियो x जगह पड़ियो 2a so 2a पावर केते पावर हला 1/2 and E2 हला अल्फा 2a पावर 1/2 so पकाओ एटी so अल्फा 2a power 1/2 into S2 again it's a square plate so area will be a square cos 0 is 1 and the value is the coordinately that is 2 to the power 1/2 alpha it is kon a to the power 1/2 into a square so which is a to the power 3/2 so total flux now the total flux is equal to phi 1 plus phi 2 which is equal to phi 2 रा देखो एटा phi 1 है एटा ताले 2 to the power half माने √2 so which is √2 alpha a to the power 3/2 एटा ला phi 2 phi 1 जगह पकेबी minus alpha a to the power 3/2 alpha a to the power 3/2 कॉमन नै जेबा so it ରହିବ କେତେ √2 ଏଠି ରହିଲା -1 so answer is √2 - 1 alpha a to the power 3/2 then it is the value of the flux and the unit of flux is Newton into meter square per coulomb this is the answer thank you